So we're just starting the machine design snap. Okay. Okay. Okay, just take a one set of gear and just draw the pressure diagrams and how the force is transmitted from the one gears to the another gear, and also apply the Lewis equation on that. Okay, how can you design the gear? You know, just write the various steps on that. Can you repeat, sir, once again? Just design the gear. Showing, sir, Lewis equation, how the stresses are working. What? Means, sir, gear design is how the stresses are working there. Basically, when I'm just going to design that, we are just gearing for the pinion. Na? Just take some, there is some amount of the force is going to transmit from the one pinion to the gear. And what are the factors, what are the forces you're just going to consider, how the force is going to transmit from one gear to the another. Just take the set of one gear, है ना? Okay. कैसे gear design करते हैं वो आप देखना. Sir, First of all, you are just taking the what type of force. just एक एक करके एक्सप्लेन कर दिया कि FT क्या है,
एक फोर्स और आता है मेरा, दो तरह के फोर्स लगते हैं अपन लोग, फिर किसके Yes, थ्रू sir. मेरा फोर्स ट्रांसफर होगा ये Now, बताते हो क्या? हाँ sir, actually the line of action will be along this line, sir. Yeah, yeah, yeah. This is 5. This is 4. Sir, this is line of action. Okay. It has two components, tangential component and radial component, sir. Okay. So we consider here, actually, sir, there are three types of stresses working here, sir. Due to FR, there will be axial compressive stresses, sir. And due to FT, there are two types of stresses generated. First, direct shear stress. Second, torsional shear stress, sir. So we will neglect axial compressive stresses and direct shear stresses. We consider only, sir. Why? Because sir, in comparison to sir, FT, sir, bending stresses, all remaining two stresses are very less, sir. So we go for design for due to bending only. So this FT is working along tangential direction, sir. Now come to the cross section of this one gear tooth, sir. And this FT is, let us suppose, sir, is acting at height h. So the total we have the design criteria, tau induced should be permissible stresses, sir. So tau induced is we go for bending stresses, sir. Sorry, sigma induced होगा sir, यहाँ पर tau मैं गलती से लिख दिया. ठीक है कोई नहीं. So we go for the bending equation, sigma y E by R is equals to M by I. So sigma is equals to My by I, sir. So M by I we can calculate for this section, sir. It has B width, T is the thickness. So M by I comes out to be BT square by 6. So we will put here, sir, in this equation. So we have FT into H, that is the total movement, and by M by I, that is the called section modulus, sir. So section modulus comes out to be BT square by 6, sir. So 6H by BT square into M we consider as a Lewis factor, sir. So we replace it by Y. So the final expression comes out to be F should be less than BYM, sigma permissible. Okay, what is the mechanism behind the key joints? Key joints, sir. Yeah. Sir, whenever the shaft and assembly is there, so basically it is costly. So to prevent the shaft and assembly, we insert a key there. So whenever the failure occurs, the key occurs. So it is very cheap, sir. So that's why we use key, sir, to prevent shaft and assembly. Okay, there are different types of jointing mechanism. Can you just explain what are the different types of joints? Joints, sir. Yeah. Joints का मतलब मेरा कौन-कौन से mechanism में joint को form कर सकता हूँ? So actually, I'm not getting so cap. Yeah. So my question, sir, I'm not getting properly. What are the different types of a joint mechanism in which way we can just join the plates, है ना? किसी भी चीज को अगर मुझे join करना है तो उसको join करने के क्या-क्या तरीके हो सकते हैं? Sir, nut and bolt. Sir, basically there are two mainly, sir, temporary and permanent, sir. So in temporary joint we have, sir, key joints, sir, quarter joints, sir, nut and bolt joints, sir. And permanent joints are we go for welding and sir, welding joints, sir, and riveted joint also, sir. Okay. What is the difference between the riveted joint and when I'm just talking about the key joint? So which is the more feasible and what are the application of that? How can you just decide at which position you are just using the key joint and you are just using the riveted joint? The key joint is actually the temporary joint, sir. Whenever we needed, we can also detach it
and the shaft and assembly can be separated. So as a temporary joint, we can use the T joint, but riveted joint is a permanent joint, sir. So once go for the riveted joint, we cannot simply separate it out the two plates, sir. So that's the main criteria. Okay, what are the different types of failure in the case of riveted joint? In case of riveted joints, shear criteria is there, sir, crushing criteria, and also for the plate we consider shearing criteria. What is the equation for the tensile strength? What is the tearing efficiency? Are you know about it? Yes, sir. Okay. Such tearing efficiency is something, sir, P minus delta H by P, sir. I mean, delta is the diameter of the rivet, sir. So it is calculated for plates, sir, not for the rivet. Steering efficiency generally always calculated for the plate, and remaining are shearing and crushing. These two efficiency are calculated for the rivet, sir. So by combining these three, we say efficiency of joints. Okay. If a group of rivets is subjected to eccentric loading, eccentric transverse shear load, it is subjected to a at a distance L from the group of joints. So which of the क्या कहते हैं rivet joint is the weakest portion and why? How can we do that for that? Sir, means what are the in what way the spacing, sir, rivet का spacing किस तरह से किया हुआ है? There are Just how many like rivets, sir? 4. आपने देखा ही होगा ना, just like I'm talking normal case. There are 4 rivets of joints. Means they One, are in two. a straight line, sir. Yeah, they are in a straight line. So sir, in this case, sir, outer means सबसे ऊपर topmost or bottommost rivet will be the sir, critical rivet, sir. Which of the following is the critical rivet? Topmost or bottommost, sir. Okay. तो यहाँ पे कौन कौन से stresses आते हैं मेरे? Sir, first will come, sir, direct shear stresses, and second will come, sir, torsional shear stresses due to torsion. Applied force will apply some torsion effect. So torsional shear stress second. Okay. Can you just draw the curve for the self-energizing brake when it is when it is just going to rotating in a clockwise direction? And also write the equation of for that. है ना? Okay. Sure. इक्वेशन क्या है? इक्वेशन लिखो और जस्ट फोर्स का डायग्राम दोनों पे शो करो, है ना? ब्रेक शू पे भी और व्हील पे भी. Yes, yes. Sir, V minus mu C. So what do you mean by self-energizing brake? Which position you are just going to fix? आपने किस पोजीशन को फिक्स किया जब ये इक्वेशन मिली है मेरी? yes, sir. O3, sir. O3 पे फिक्स किया तो माइनस आएगा कि प्लस आएगा? किसमें, सर? V minus mu C जो आपने लिखा है. Sir, this friction force will support P, sir. तो P का वजह से जो मोमेंट आएगा ये फ्रिक्शन फोर्स का वजह से भी वही मोमेंट क्रिएट करेगा. आपने फ्रिक्शन की डायरेक्शन शो करी है दोनों पे? नो सर, नो सर. व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ एनर्जाइजिंग ब्रेक? पहले तो ये बता दो आप. So self-energizing brake means, sir, whenever we apply the moment due to the applied force and the moment due to the friction acts in a same direction, so it helps in braking, sir. That is the self-energizing brake. ठीक है, अब इसके इक्वेशन सही करो पहले. आप फ्रिक्शन का डायरेक्शन दिखाओ दोनों पे.
सर ये तो ठीक ही है सर, इसमें क्या सर मेरे को हियर सर P into L N is above सर। ये O3 पे एक क्वेश्चन आया है जो आपने लिखा है। हाँ ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। पहले आपने FS व्हील पे नहीं लिखा पहले है ना। पहले यही था सर, पहले यही था सर। ओके ओके। सो विकास, व्हाट्स योर इंटरमीडिएट? विकास आ गया इंटरमीडिएट आपका कि अभी नहीं आया? नहीं सर अभी तो नहीं आया सर। अभी तक नहीं आया? नो सर। सो इट मे बी सर हाँ फर्स्ट वीक ऑफ मे, फर्स्ट वीक ऑफ मे और सर लास्ट वीक ऑफ अप्रैल है सर। कब के पास आउट हो विकास आप? 19 सर। तो अभी तो काफी अच्छा चल रहा है आपका, कोई ऐसा इशू नहीं लगा मुझे आज के भी उसमें भी डिजाइन में। और अपन लोग कुछ क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। आप ना 4 to 5 डेज के गैप के बाद फिर ज्वाइन करना, ठीक है? तो वी आर डिस्कसिंग सम मोर क्वेश्चंस आल्सो, ठीक है? Yes, sir. धीरे धीरे अपन लोग सर आप लेवल को, हाँ बोलो बोलो ओके बोलो सर, क्या क्या। टोम का भी सर आप ले लेंगे सर, अभी थ्योरी ऑफ थोड़े मशीन। 2-4 दिन रुको, फिर मैं आपका कराता हूँ, है ना? DRDO के लिए मैं कुछ स्पेशली कुछ वर्क कर रहा हूँ अभी। जैसे मेरा थोड़ा सा वर्क कंप्लीट हो जाएगा, देन आई विल जस्ट टेक सम कलेक्शंस ऑफ क्वेश्चंस व्हिच इज जस्ट यूजफुल फॉर यू। तो वो अभी थोड़ा सा इंटरव्यू हो जा रहा है 2-4 लोगों का, जिससे हमें फीडबैक मिल जाए कि एक्चुअली व्हाट दे आर गोइंग टू बेस। अभी 2 दिन इंटरव्यू हुए हैं तो उनसे फीडबैक लिया है, बट अभी थोड़ा टाइम लगेगा, 4-5 दिन में एक एक्चुअल फीडबैक मिल जाएगा कि हाँ व्हाट दे एक्चुअली वांट। तो उसके बाद फिर आपको जो हम कराएंगे तो आपको थोड़ा सा बेनिफिट रहेगा उसमें, है यस ना? सर। और सेकेंड सर वो थोड़ा डाउट था, आईएएस का जो सिलेबस सर वो उसको कवर करना जरूरी है सर, लाइक किसका सिलेबस? डिटेल में सर एवं ऊपर तो किसका सर किसका? आईएएस का जो सिलेबस था ना सर वो तो नहीं डीआरडीओ नहीं में नहीं, वो भी था सर, ऐसा कुछ तो जरूरी नहीं है। उसको डिटेल में कवर करना जरूरी है क्या सर? आईएएस जैसे लाइक मेकाट्रॉनिक्स सर, रोबोटिक्स। अब देखो बेटा, अब वहां जाके तो वो कुछ भी पूछ सकते हैं, बट अभी जो 2 दिन का फीडबैक मिला है उससे मुझे थोड़ा कम लग रहा है, इवन दो दे आर नॉट आस्किंग अबाउट द प्रोजेक्ट्स आल्सो। तो अभी थोड़ा रुक जाओ, 4-5 दिन रुको, फिर अपन डिस्कस करेंगे इस बारे में, है ना? कुछ अभी आ जाने दो बच्चों का एक वो कि हाँ एक्चुअली में क्या चल रहा है, ओके ठीक है? ओके, थैंक यू। सर, थैंक यू सर।